Hi everyone and welcome back to this Bootstrap lecture 2. And before we discussed about what is Bootstrap and how you can take advantage of using Bootstrap in your projects. So अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर आपकी एक जॉब है तो आप कैसे Bootstrap को इजीली अपने HTML के साथ इम्प्लीमेंट करके आप किस तरीके से उस इम्प्लीमेंटेशन को यूज कर सकते हो टू मेक ऑसम वेब एप्स। तो लेट मी शो यू हमारे लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या परफॉर्म किया था। So this was a quick bootstrap win which we did, and today we are going to talk about layouts. Yeah, layout एक bootstrap का बहुत important concept है जिसके थ्रू आप responsive sites बना सकते हैं. So let's get started. I will be making an HTML tag in which followed by a head tag, followed by a head tag. Let me correct this, followed by a head tag. And the head tag consists the title tag, and this will be responsive layouts. And this will be bootstrap. Bootstrap like this. So, हमारा body tag में I already told you about div tag, which is self-occupying container. That means इसका जो साइज रहता है ये अपने आप वो साइज में एडजस्ट हो जाता है जितना उसके चाइल्ड एलिमेंट्स है. So let me just start with a div, and in this div, let me introduce with a new class which I'm going to use. First of all, we are going to take container fluid. This is another bootstrap class जिससे आपका एक आपका कंटेनर रहता है, एक आपका कंटेनर फ्लूइड रहता है. Let me show you the difference between container and container fluid, and going to use inbuilt bootstrap class which is a container, and then I'm going to use my bootstrap link so that I can implement bootstrap in my application like this. Now in order to show you कि ये कैसे काम करता है, let me just include one style tag, and in which I am going to now include div fluid one tag, and this will be div basic like this. And inside this, just use this classes like this, and you can check this out. Like for example, I'm going to use border 1 pixel solid black, 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 make sure to spell it correct. And other one is going to be div basic like this. And you can also provide a border to this like I'm providing. तो इससे क्या होगा, आपको इजीली दोनों डिव्स का जो डायमेंशंस है और कितना वो स्पेस लेते हैं आपको वो पता चल जाएगा इससे. तो लेट मी जस्ट कॉपी माय पाथ, पेस्ट इट हियर, हिट एंटर. तो अभी इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू इज कंटेनर फ्लूइड like this, container fluid, and the other one will be just a container like this. And when I hit save, आप देख सकते हैं, if I zoom in a little bit, you can see कंटेनर आपका पूरा स्पेस लेता है, पूरे विड्थ लेता है, बट कंटेनर फ्लूइड आपका पूरा विड्थ लेता है. बट जो आपका कंटेनर है वो थोड़ा बहुत मार्जिन साइड से एंड इधर से दोनों जगह से लीव करता है. If you open inspect developer tools and you hover over this element container and shift this below, and also here in the style tag, let me just again hover over this element, and अगर आप सबसे लास्ट में आते हैं, आप ये देख सकते हैं ये एलिमेंट में बाहर आपको यहाँ पे 32 पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड 32 पिक्सल्स फ्रॉम द राइट आपको यहाँ पे स्पेसिंग मिलती है, मार्जिन मिलती है. So like this a container works.
And for our development, what I'm going to use is I'm going to use div fluid. Okay, this one. तो बेसिकली आपका जो लेआउट सेक्शन रहता है ग्रिड लेआउट वी यूज टू हैव रोज एंड कॉलम्स नाउ मेन थिंग टू नोट इज every row has 12 columns. This is your special rule. Rule number one is that every row has 12 columns. That means if I use div class row, and within that if I use div class column col, let me take this col and put 12 over there, and to this I'm going to now use it like this, div class call 12 like this. And now if I copy this and just provide a border to this so that आप देख पाए वेब पेज पे कैसा दिख रहा है. Let me apply one border. It's a solid black like this. And if I hit save and reload, just let me put some content like one. So you see इसने पूरा 12th width का size लिया है इस column में. But if I reduce it to 10, then you see इसने 10 spacing लिया है. इस चीज को और क्लियर करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आई कैन डू वन मोर थिंग. हम यहाँ पे लिखते कॉल वन एंड वी विल डुप्लीकेट दिस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 like this. And for starters, let me just do it like this. Six and that's 7 8 9 10 11 and 12. Hit save. And now you can see the sizing, really the sizing. Let me just quickly remove this, and from my classes remove this 12 because now the purpose is div class false. Everything is falling. So now you see how your columns are divided over the screening, over your screen, and each and every row, whether it's a Bootstrap library or कोई भी library है, हर एक library UI kit में, in the browser or in the mobile view or anywhere else in the responsive design, you are going to get 12 rows per column. And the most important thing starts when इट्स अ रिस्पॉन्सिव साइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी मैंने इसमें 12 कॉल्स दिया तो अभी आप देख पाएंगे इनकी विड्थ जो है श्रिंक होती है. अगर ये बड़े मॉनिटर पे है तो ये स्पेसिंग पूरा इतना लेते हैं, बट अगर इनको मैं छोटा करूँ तो देखिए अभी स्पेसिंग इस तरीके से कम होती जाएगी. अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इनमें से ये वन हटा दूं, आई रिमूव दिस वन एंड नाउ हिट सेव, तो नथिंग हैपेंस. बट व्हेन आई क्लोज दिस, अब ये विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव डिजाइन लेते जाएंगे. जैसे इस विड्थ में आपको फुल 1 से लेकर 12 तक मिलते हैं कॉलम्स, पर इफ यू रिड्यूस द साइजिंग, रिड्यूस, यू सी 1 to 11 अभी ये पूरा विड्थ ले रहा है और 12 नीचे आ गया है, तो दैट बिकम्स रिस्पॉन्सिव. ना 11 भी नीचे आया है, इसी तरीके से 10 भी नीचे आया, एंड दैट्स द मिनिमम साइज वी रीच्ड. So 1 to 9 is one row, and the other row, another row बना है dynamically in which the elements are called 10, 11 and 12. And because हर एक row में 12 maximum size रहता है, तो 12 divide 3, तो ये अभी 4 size ले रहा है. 10 भी 4 ले रहा है, 11 भी 4 ले रहा है, and 12 भी 4 ले रहा है. 4 plus 4 8, 8 plus 4 12. So this is the power of Bootstrap's rows and columns. Now let me have another example.
another use case example. Like for example, we are having div class row, and within that we have div class call, call 6, like this. And I will duplicate this and place it over here and give it a name like call underscore 1 and call underscore 2, like this. And over here, if I use call 1 and give it background color of Dodger blue and dot call 2 and give it a class of background color red, and if I hit save and I reload, nothing happens. बिकॉज मैंने आपको बताया था div एक अपने आप में कंटेनर होता है जिसके अंदर वो कंटेंट से रहता है, एंड देर इज नो कंटेंट, तो ये कुछ साइज नहीं लेगा. In order to fix this, you can give a fixed height to your contents, like height, or let's say 500 pixels. That's it. And when you hit save, you see you get an exactly measured height, because now हमारा जो कंटेंट का साइज है वो हमारे CSS प्रॉपर्टी हाइट पे डिपेंड करता है. Let me reduce this a bit so that you can have a more clearer perspective. When I hit reload, you see this? We get two divs exactly 6 on 6 size. And if I reduce this, they will remain 6. So like this, you can do a play around. Also, you can do it like this, 4, 4, and then you can come and take one more 4. You can use another bootstrap class, this. And if I hit save, see, so like this, you can play like I will use here VG dark. If I hit save, and here VG warning. VG warning. Okay, got it. We need the width, and we will give it like this. So this is really the power of Bootstrap and its layout. सो ये लेआउट का लेक्चर काफी लेंदी होने वाला है, इसलिए मैं इसको मल्टीपल वीडियोस में स्प्लिट करने वाला हूँ. बट अभी के लिए यू कैन क्लियरली कंसिडर दैट इन ए लेआउटिंग सेक्शन वी हैव अ कंटेनर, एंड इनसाइड अ कंटेनर वी हैव अ रो एंड वी हैव अ कॉलम. एंड कॉलम साइज हम इवन नंबर्स में कैसे भी हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं. इनिशियली वी डू हैव कॉलम ऑफ कॉलम वी कैन गिव फ्रॉम 1 to 12, but each row should be splitted into even number of columns. So this was pretty much a short lecture regarding the layout section. I hope आपको rows, columns और container का combination समझ में आया होगा, क्यों हम इसमें divs use करते हैं, and how you can manage responsive layouts. हम अभी इसमें और next videos में इसके बारे में और चेक करेंगे. Till then, please आप इसका practice करें. कोई भी डाउट है आप मुझे comment section में mention करें. And if you find this lecture useful, please consider hitting that subscribe button and like the video, and I will see you in the next video. Thank you, bye, and take care.